If you thought the future of smartphones is foldables, well, you might want to think again because the future could be full of smartphones with rollable displays. और अगर आप convinced नहीं हो, then we might see future of smartphones with bendable displays. और अगर आप फिर भी convinced नहीं हो, then we might see smart devices with no displays at all. Well, that's what I'm going to be doing today. I'll show you 5 smartphones that will totally blow your mind. But एक चीज याद रखो, some of the smartphones that I'll be showing you, they're concept devices. इसका मतलब मार्केट में आते-आते कुछ साल शायद ज़्यादा और लग जाएं. But there are some devices that are already available, but they're not available in India. But for that, in this video, I'll show you all those devices because I'm here in Barcelona, Spain, covering MWC. अब जिससे पहले हम सारे exciting devices में आए, let's start with something which is already available outside of India, which is the Honor V2 Foldable. Launched the Magic V2 foldable smartphone last year, but at this year's MWC 2024, it introduced a special edition in collaboration with Porsche. Honor ने इसका नाम रखा है Honor Magic V2 RSR और ये फोन शानदार दिखने में है. इसका बैक पैनल भी ऐसा डिजाइन किया गया है जैसे कि कोई स्पोर्ट्स कार हो और कंपनी का कहना है कि ये Honor Magic V2 RSR comes with an anti-scratch nano crystal shield, basically better scratch protection के लिए. Specifications wise, it's similar to the regular Magic V2 foldable. It weighs roughly 234 grams और side से it measures just 4.8 millimeters when unfolded. बाहर मिलता है ये 6.43 इंच का डिस्प्ले एंड इनसाइड वी गेट अ 7.92 इंच LTPO OLED डिस्प्ले विद IMAX enhanced certification. Also, it is powered by Snapdragon 8 Gen 2, जो Qualcomm का पुराना चिपसेट जरूर है, but there are some eye-catching AI features. There's also a focus on the cameras. The back has a 50 megapixel main and a 50 megapixel ultra-wide camera. But it is not the specifications, but the weight and the form factor which makes this super exciting and makes me excited about the future of foldables. Well, you know what? I've actually used multiple foldables in the past. मैंने Samsung का foldable use करा है, मैंने Xiaomi का foldable भी use करा है और साथ में भी recently OnePlus का करा था. But this one, by far, is the lightest foldable that I've ever held in my hand. इन हैंड फीलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पीछे बैक का भी पैनल बहुत सही और स्मूथ फिनिश देता है. बट येस, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया येट. मे बी इन द फ्यूचर, हू नोज. बट बियॉन्ड ऑनर, अब देखते हैं ऐसा ही एक ब्रांड जिसका नाम आपने शायद कभी सुना ना होगा. इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली ही सुना है एंड इट्स कॉल्ड द Enegizer P28K स्मार्टफोन, जिसमें मिलता है एक 28,000 mAh बैटरी. And needless to say, this phone is super heavy and very bulky to carry. बैटरी बैकअप भी एकदम क्रेजी है. कंपनी का कहना है कि एक सिंगल चार्ज में Enegizer P28K will last up to 5 to 6 days. And if I leave the battery aside, it is like any other Android smartphone. Actually थोड़ा outdated भी है because it is running on Android 12. The display is also very average and the camera also utilize a very boring design. Now, as I mentioned, the phone is definitely very bulky. It is also on the very much of a heavier side. 550 ग्राम का ये phone है, which is almost half a kilo. But yes, the phone will take a long hour to charge. अब इसमें है 33 watt का fast charging support. Fast है कि नहीं वो तो पता नहीं, but the phone will take around 5 hours to fully charge. Speaking of design, Enegizer से थोड़ा ही दूर हमने देखा टेक्नो का रोलेबल स्मार्टफोन. But before we get there, let's see एक और मजेदार स्मार्टफोन at Lenovo stall, which is Motorola's concept bending phone, जिसका नाम मैंने रखा है Motorola Bendy. अब जैसा नाम है, you can guess it. The phone can bend and double as a bracelet. अब इसके use cases कम है, but in the future, it can be used in cars or any other smart devices with a bendable display. In the Motorola Bendy, you can play games, take video calls in a tent mode, and much more. अब देखो, फोन बॉक्स के पीछे जरूर है, बट आई डिड गेट द चांस टू प्ले अराउंड विद इट फॉर अ व्हाइल. अब आप कुछ चीजें नोटिस करोगे, जैसे कि इसका है पीछे फैब्रिक बैक. अब फैब्रिक बैक का फायदा ये है कि द फोन व्हेन इट बेंड्स उसमें क्रैक नहीं आएगा. अगर लेदर बैक होता है तो उसमें आपको क्रैक दिख जाते हैं. ऑब्वियसली अगर कोई प्लास्टिक मटेरियल होगा वो भी क्रैक कर जाएगा. दूसरा ये है कि इसकी जो बैटरीज अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, सो दैट व्हेन द फोन बेंड्स द बैटरी डजंट बेंड एज वेल एंड इट डजंट डैमेज द फोन. ड्यूरेबिलिटी की गारंटी अभी भी नहीं है एंड फुल स्पेसिफिकेशंस आर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री. लेकिन Motorola says the phone has a 6.9 inch flexi OLED display. डिस्प्ले का रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है एंड व्हेन इट्स बेंट आपको ये 4.6 इंच का व्यूइंग एरिया मिलेगा. But do keep in mind, more apps need to be optimized to work on this form factor.
Another crazy innovation I saw was not exactly a smartphone but a replacement of phones. अब आपने पहले इसे शायद देखा होगा or maybe definitely seen in some viral video. It's the Humane AI Pin. This pin operates without a display. In fact, सब कुछ आपके palms में display होगा. इस पिन में natively AI का support है and the AI can even detect scenes and overlay information right on your palms. और आप इसे कैसे control करेंगे? Well, with the most intuitive element, which is your fingers, which if you ask me, is very cool. Now, I didn't get to test the device personally, but that gentleman over there, he gave me a very nice demonstration. Well, now, इसके काफ़ी सारे use cases हैं, but the one that I really liked is that future में अगर कोई visually impaired है, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, अगर वो इसको use करेंगे, well, the sensors can scan what's around them and they can hear whatever they can't see. तो ये काफ़ी cool technology था, but हाँ, जैसे मैंने बोला, I couldn't test it, I couldn't use it, but जो next device है, I could actually use it in my hand and it is pretty cool and you might want to stay tuned for that. और हम फाइनली आते हैं टेक्नो के रोलेबल स्मार्टफोन के पास। अब रोलेबल डिवाइसेस हमने पहले भी देखा है। आइडिया सेम है, नॉर्मल मोड में एकदम रेगुलर स्मार्टफोन जैसे दिखेगा, बट इट कैन रोल आउट अ बिग स्क्रीन टू गिव यू अ टैबलेट लाइक फॉर्म फैक्टर। What makes this phone so exciting is that इसका जो रोलेबल टेक है, that happens very fast and in my brief time I loved using the display. और एक और मजे की चीज है कि that I did not see significant mistouches. Similar to the Moto Bendy, the Techno Rollable, which is called Phantom Ultimate Prototype with rollable display, also uses a flexible OLED display. Now the smartphone is utilizing flexible OLED display. Now this technology has been around for a while, but of course this one is much more refined. Now if I press this button, you can see the rolling is happening and it happens in around 1.3 seconds, which is very good. The hinge also feels very sturdy and the phone is around 10 millimeters thick. So now it is not the thinnest in terms of this new smartphone standard, but हाँ, इन हैंड फीलिंग बहुत ही बढ़िया है, पर ये भी है कि यहाँ पे एजेस थोड़े शार्प है, तो अगर ये बाद में कभी रिफाइन होगा, तो कंपनी माइट नीड टू कीप इन माइंड कि इससे हाथ ना करें। ऑल्सो पीछे की बात करें तो यहाँ पे ये डिस्प्ले भी है, विच इज यूजफुल फॉर नोटिफिकेशन। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे कैमरास भी है जिसमें अभी सेंसर नहीं है, सो वी कुडंट शो दैट टू यू एट दिस पॉइंट। Already published a dedicated video on the rollable display phone, which you can find on our YouTube. अब देखो, ये थे 5 हटके स्मार्टफोन, एक्चुअली 4 थे, बट येस, हमने और भी कई सारे डिवाइसेस देखे, हमने ट्रांसपेरेंट लैपटॉप देखा, हमने स्मार्ट रिंग देखा, एंड फॉर ऑल दैट कीप फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया चैनल सो दैट यू गेट ऑल द कवरेज। बट अंटिल देन आप हमें कमेंट्स बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो एंड विच डिवाइस यू लाइक द बेस्ट। डू फॉलो 91 मोबाइल्स इफ यू हैवंट येट। आई एम अभिक एंड आई विल सी यू वेरी सून।